Hello everyone, welcome to Vidya Mandir IT in itself. I am Sandeep Patil. So today, next periodic property, that is electronegativity, we are going to discuss. Electronegativity. गंमत म्हणून मी त्याला भिकारीपणा म्हणतो. That is electronegativity. What is electronegativity? Before we go to electronegativity, already जे झालेलं आहे ते कोणतं आहे ट्रेंड? ॲटॉमिक रेडियस. वी हॅव सीन द ॲटॉमिक रेडियस. वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट isoelectronic species, and now in today's lecture we are going to see the another property, periodic property, and trend in electronegativity. So what is electronegativity? The definition of electronegativity, here I have given the definition. It is the tendency of an atom to attract, to pull, to attract or to pull. Kunala? The shared pair of electrons towards itself. Now, where does sharing happen? Sharing of electrons happens in a covalent bond. So the covalently bonded, this bond is there, na? Two electrons. One bond means two electrons. So, when we say more electronegative atom, that atom which has the tendency to pull more electrons. So now, what is electronegativity? Electronegativity म्हणजे काय? The tendency to attract the shared pair of electrons towards itself is known as electronegativity. Now, for example, you know that HCl, hydrogen chloride, when it is a gas, hydrogen chloride gas, when you put it in water, it is a hydrochloric acid. Okay, so here there is one single covalent bond. There is one single covalent bond between hydrogen and chlorine. There is a one single covalent bond between hydrogen and chlorine, and from this you can understand one electron is shared by hydrogen, one electron is shared by chlorine. Hydrogen and chlorine, not carbon. Hydrogen and chlorine. Now, they say that chlorine is more electronegative. What is the meaning of that? This shared pair of electrons are pulled more by chlorine. When chlorine pulls more electron towards itself, it just pulls the electron. पूर्ण electron transfer होत नाहीत. Just the bond is there आणि bond असा झुकतो असा इकडे क्लोरीनकडे. क्लोरीनकडे दोन इलेक्ट्रॉन झुकल्यामुळे partial negative charge is developed. When a slight shift of electrons towards chlorine is there, here partial negative. So this small delta, complete minus nahi hai, partial delta, partial negative and partial positive charge is developed. Are you getting? ह्याला अनेक वेळा असंही म्हटलं जातं, बहुत बार इसको ऐसा भी बोला जाता है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड. पोलार, द्विटोकीय, two different ends, positive and negative. Polar covalent bond. Covalent bond is there, sharing of electrons is there, but it has the charges partial delta, partial positive, partial negative. So here chlorine is said to be more electronegative. So the tendency to attract the shared pair of electrons is more in chlorine. Therefore, chlorine is said to be more electronegative than hydrogen. Are you getting this? Yes. Now, every periodic property, प्रत्येक periodic property आपण त्याचे trends बघत असताना left to right what happens or top to bottom what happens. Before we see that, we should know what are the factors, isn't it?
what are the factors that affect or that influence electronegativity? The first factor you should always remember, that is the size of the atom, atomic size, atomic radius. Okay, smaller is the size, more is the tendency to attract. Take a sir. How it is possible? I will show you. Now, one atom is there with this positive charge here. Another atom is there with this positive charge, and this atom is big. High atom, big atom. Now, this atom is going to, suppose, attract electrons here, electron. Another atom will be there here, no doubt. Leave this atom. This atom is going to attract this electron. Now tell me, अब बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये वाला एटम कि ये वाला एटम? द आंसर इज दिस वन, बिकॉज smaller is the size, this positive charge will be nearer and it will attract more. So smaller the size, more is the electronegativity. So size of the atom and electronegativity are inversely proportional. Electronegativity, En. Electronegativity I will denote by En. So size of the atom is less, electronegativity is more. Yes. Okay. Next one, nuclear charge. Nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का. सो मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. नाउ ठीक है, जब न्यूट्रल एटम्स दिए हैं तो आप ये जज कर सकते हो कि स्मॉलर साइज ऑफ द एटम, या वी कैन डिसाइड ऑन द फैक्टर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. बट सपोज आयन्स आर गिवन. टू टाइप्स ऑफ आयन्स आर देयर, कैटायन एंड एनायन. कैटायन, डॉग आयन मत बोलना, एनायन, cations and anions. So now cation, I will show you one cation. Suppose अभी देखिए, if I am writing something like this, suppose one cation m लिखता हूँ, m प्लस या m प्लस प्लस, बताइए कौन अट्रैक्ट ज्यादा करेगा? जिसका चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन ज्यादा है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज चाहिए. पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे इसका, पर्टिकुलर एग्जांपल आई विल शो यू. नाउ सपोज ये वाला देख रहे हैं, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन. हियर आई विल शो यू. सपोज Fe+2 एक आहे and another one is Fe+3. Who will have the tendency to attract more? Ferrous. Fe+2 is ferrous, Fe+3 is ferric. Who will attract more? Ferric will attract more, isn't it? ठीक. Now next one, charge on anion. Let us see charge on anion. For example, मैंने ऐसे लिखा, N नाइट्रोजन माइनस, ये N -2, ये N -3. देखो तो anion, the negative charge is more, so much more negative charge. Negative again it will not attract negative का concentration हो गया है, फिर से वो negative को नहीं attract करेगा. So it is having the lowest attraction, that is it is having lowest electronegativity, it is having the highest. Right? In this way you understand the factors affecting the electronegativity. Another factor is there which affects electronegativity, that is hybridization.
hybridization of the molecule or hybridization of that particular atom, I should say particular atom hybridized. So ये जो कंसेप्ट है ना हाइब्रिडाइजेशन का, वो आगे आने वाला है केमिकल बॉन्डिंग मध्ये. उसमें केमिकल बॉन्डिंग में आपको मालूम पड़ेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन. टिल देन we'll have a pause on that, isn't it? So hybridization also affects electronegativity. ठीक है? All right. Now let us have the trends. Trend यानी मालूम है? Trend in a period from left to right, what happens in a period? From top to bottom, what happens in a group? किसका देखेंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम. इमेजिन करना शुरू करो क्या होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके यही कंसेप्ट्स आप यूज करने वाले हो. हायर प्रॉब्लम्स छुड़ाने हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तब एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, are you getting, shielding or screening effect, all these you are going to discuss, isn't it? So trends in periodic properties, let us see the trends in periodic properties. ठीक है. So what are the trends in periodic properties in a period, in a group, in a period, along a group, in a period. So इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखना है. ट्रेंड. So you are dealing the trends in a period. साहब क्या होगा in a period, क्या होगा देखेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बनेगा in a period, you know from left to right, एटॉमिक साइज कम हो रहा है. एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग. Electronegativity will increase. In a period again, nuclear charge is increasing. Nuclear charge increases. So the electronegativity also increases. ये दो factors enough. These two factors are enough to tell that left to right electronegativity big increase. Yes. And in a group, let us see in a group में आप देखोगे कैसा है साइज. पीरियड में ऐसे कम होना, एटॉमिक साइज कम होता है. ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ रहा है. ग्रुप में देखिए ये पहला एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बहुत बड़े. क्या एटम्स इतने बड़े होते हैं? जस्ट आई एम इमेजिनिंग. फर्स्ट वन विल बी इतना सा, थोड़ा बड़ा ऐसे बढ़ते जाते. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन अ ग्रुप. इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा, कम होगा. और न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक साइज इतना बढ़ रहा है ना, वो बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर लेता है. इसलिए टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आएगा. द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से बहुत दूर जा रहे हैं. सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस along a period, and top to bottom electronegativity decreases in a group. Electronegativity decreases in a group. Are you understanding this? Okay. Now let us say two concepts are one and the same. One and the same हमको लगते हैं, लेकिन what is the difference that we are going to see in the next session? Very important session is there. Difference between electronegativity and electron affinity. Difference between electronegativity and electron affinity. और उसका भी हम देखने वाले ट्रेंड्स.
हालांकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इन तीनों का ट्रेंड एक जैसा आता है साहब, एक जैसा आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग देने के लिए, बहुत प्रैक्टिस बनाने के लिए, वी विल deal with all the three concepts. Okay, in the next concept you will be learning electron affinity, the trend. Okay, in today's lecture we came to know about the electronegativity का trend, और पिछले lectures में हमने देखा था atomic size की trend और isoelectronic species. Okay, keep enjoying studying chemistry. Okay.